नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज की विशेष चर्चा है पॉलीफार्मेसी वर्सेस सिंगल सेमिनार और हमारे साथ में हमारे विशेषज्ञ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर कुmarDhawale, जो कि मुंबई से हैं और सर पहले प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इनका रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है। आज मेंबर भी हैं CCRH में, एडवाइजरी कमेटी में, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में। तो मेरे ख्याल से इनसे अच्छे जवाब हमें कोई नहीं दे सकता कि ये सच क्या है पॉलीफार्मेसी का और सिंगल सेमिनार का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आजकल के टाइम में जो मॉडर्न साइंस है, ये जो मॉडर्न टाइम है, इसमें सबने एक अलग अलग प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है। अगर हम प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं तो क्योंकि मल्टीपल डिजीजेस होती हैं लोगों को, डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर भी है, किडनी डिजीजेस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं सब में। तो आपका अनुभव क्या है इस केस को? क्या हम पॉलीफार्मेसी से ही मैनेज कर सकते हैं या सिंगल सेमिनार के साथ हमें स्टिक रहना चाहिए अपने प्रिंसिपल के साथ? पॉलीफार्मेसी का डेफिनेशन आप क्या करते हैं उसके ऊपर वी आर डिपेंडेंट। जैसे कि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और सम अदर विटामिन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा, नाउ जब भी हम वो करेक्ट करते हैं तो दीज आर सब्स्टिट्यूशन measures that we are adopting. So we are only replacing what has been lost by the body. So that doesn't constitute a polypharmacy when we are adding those substances for healing. Polypharmacy कब होता है? For example, I have a patient who is say on my treatment for diabetes, and he suffers an injury like a fracture. Now when that happens, I will unhesitatingly add Symphytin or some of the injury medicines without stopping my symptom. So that is one aspect where I am fully justified in adding another homeopathic medicines to the existing stream, which is the classical stream. The other aspect is where when one carefully looks at the totality and one finds that a particular remedy is covering a totality, but significant other aspects of the symptomatology is not being covered, and we are not able to get a common medicine which covers everything, in which case I will consider cautiously looking at the possibility of having another remedy which will complement. Now this we are able to see very commonly when we are introducing intercurrents. When we add intercurrents, we give an intercurrent and we continue with the so-called current, that is the symptom. So people object even to this, but there is a scientific basis as to why we are using two homeopathic medicines at the same time. And the third good possibility and a frequently occurring clinical condition is where we are justified in using mother tinctures. When we are using mother, for example diabetes, when we are using say Syzygium, because Syzygium has got a tissue affinity to diabetes and to correcting the sugar. So definitely adding on a mother tincture along with the symptom is also justified. So I would look at these three places where the fourth situation where I have found, and I'm studying it because it is something that a number of people are doing, where in advanced cases of cancer. Yes.
where we are looking at palliation and where certain practitioners are using a combination of medicines which are based on two. One, pathology, second, location. Yes. So when we are doing both of these and when we are adding them, there looks to be a justification, because cancer is a clinical condition which, according to our analysis, is a mixed miasmatic condition. So when there is a mixed miasm, we are likely to be justified in giving a number of remedies which will look after the susceptibility of a cancer patient and try to correct it at different levels. Sir, in short, what we can say is that according to the condition, we can prescribe 2 or 3 medicines and it's justified. But एक क्वेश्चन है सर, एज अ रिसर्चर ऑल्सो, जब हम रिसर्च में जाते हैं तो हमें एथिकल कमिटी में कई बार ये क्वेश्चन रेज करना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ. द लॉ सेज यू हैव टू यूज सिंगल सिमिलर, बट प्रैक्टिकली हम मदर टिंचर देना चाहते हैं क्योंकि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एज वेल एज ही हैज सम अदर कंडीशंस आर देयर. तो वहाँ पे हम कैसे इसको करें, पॉसिबल कैसे करें, क्योंकि हमारे लॉज हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं ये करने से. रिसर्च में स्पेशली ऑर्गेनॉन जब होता है तो वहाँ ऑर्गेनॉन की वो लोग ये हमेशा मुझे कहते हैं कि कई बार एक मरीज भी आती है कि ये तो जस्टिफाइबल नहीं है, आप इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ आपको लॉ फॉलो करना ही है, पर वहाँ पेशेंट कॉम्प्रोमाइज करता है, हमारी रिसर्च कॉम्प्रोमाइज करती है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? See, as far as research is concerned, the main plank on which we look at research is through appropriate controls. Yes. So where we see, there are two things. One is that जो intervention आप करना चाहते हैं, that intervention must have a proper evidence base. Like for example, we are using mother tincture XIZJ. It has to have a proper base in our literature as well as in the studies that have carried out. So the intervention is effective, number one. Number two, where you are looking at the efficacy of the intervention, then you are going to propose a control. So control population is able to take care of an intervention that you are researching. So therefore the ethical committee under those conditions should not have any objection. Thank you very much sir for this answer. Actually, I was looking for this answer from many days. How to not tell them that just allow us to do these things, because it is important. See, the principle of research should not be violated. Yes. That we should adhere to. And then if we are able to give a proper scientific evidence for it, ethical committee which comprises of knowledgeable people should be able to get convinced. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूँगी. ये तो हो गए कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहाँ वी नीड टू पैलेट द केस और इन एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर जहाँ हमें जस्टिफाइड लगता है कि हमें 2-3 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं. पर क्या हम ऐसे क्रॉनिक इलनेस में भी ऐसा कर सकते हैं, 2-3 मेडिसिन एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द केसेस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस और एनी दिस काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, क्योंकि आजकल कुछ प्रोटोकॉल्स लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं एंड दे हैव एविडेंसेस ऑल्सो. आई विल नॉट डिनाई दैट ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू लॉ जब हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द स्टूडेंट्स आर दे हैव वेरियस स्कूल्स ऑफ होम्योपैथी नाउ, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स भी हमसे बोलते हैं कि वाई डोंट वी यूज दिस प्रोटोकॉल्स. They are giving 3 medicines at different times. They are not mixing the medicines, but they are using 3 medicines in one case. तो उस केस में हमें स्टूडेंट्स को कैसे गाइडेंस करना चाहिए या हमें क्या
आपका सर अनुभव? See the type of conditions that you describe, for example, condition allergic rhinitis Yes. and all that. I don't think many practitioners find it essential to use more than one medicine. उसमें एक ही है कि sometimes for an acute exacerbation of an allergic rhinitis, you may use a medicine like L-Cepa, but that medicine is not capable of managing the susceptibility of an allergic rhinitis. For that, you will have to give the constitutional medicine. So some of these chronic conditions there is no justification for doing polypharmacy. But as I said, other chronic conditions, like I gave an example of cancer, Right. or nowadays in a lot of patients that come to us, homeopaths, with chronic, say, rheumatological conditions, Yes. which are already have been exposed to a lot of suppressive treatments. Either it can be steroids or biologicals, or anti-inflammatory and all that. So now where those conditions or those drugs are being given, the picture is getting distorted. So the original unmodified picture that we are told to define, that is no longer available. So therefore then, as Hahnemann also has said, that we have to go by looking at whatever pictures that are coming up, and there in conditions we might find the possibility of using remedies in succession or together in order to get rid of the overlying symptom cover, so that the underlying original picture of the disease comes to light. So हम ऐसे conclude कर सकते हैं आपकी बातों को कि it depends all on the situation of the patient. Absolutely. So it is also justifiable that if there is in certain conditions we can use 2-3 medicines also. The patient needs that. If the case needs, or there is a demand for 2-3 medicines. So thank So you the very principle to conclude, principle of totality and principle of susceptibility, Right. these two have to be taken into consideration before we do this. So, thank you very much, sir, for your enlightenment. I mean, these answers are बहुत हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके तजुर्बे, आपकी रिसर्च. Thank you very much. Thank you so much.